Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today we will learn about neutralization and its applications. It is from the chapter Acids, Bases and Salts of General Science of Class 7th. हम बच्चों पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड्स, बेसिस, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर सोर्सेज। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। फर्स्ट, let me know what do we mean by neutralization. Neutralization क्या है? what is meant by neutralization? Neutralization किसको कहते हैं? Neutralization is the process in which acid and base combine to form salt and water. सो reaction से change यथ में acid तो base पान combine गसान बनावा salt तो water। अथ process च वनान अथ reaction च वनान neutralization reaction. What happens in neutralization reaction? The acid, it nullifies or it cancels effect of base, and base in turn cancels the effect of acid. So the overall product we get, that is salt and water. And what happens in this process? The effect of both acids and as well as bases is cancelled. For example, we will take an example. If we treat HCl, that is hydrochloric acid, with sodium hydroxide NaOH, if they are made to react, when we combine them under proper conditions, what happens? These combine and they will form NaCl, that is sodium chloride, and H2O, that is water. This is one of the examples of neutralization reaction. So neutralization reaction, what happens in neutralization reaction? Acid combines with base and they form salt and water. This neutralization reaction, it is very much important in our day-to-day lives. हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशंस क्या है, हम कैसे उसको अप्लाई करते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को। नंबर फर्स्ट, अगर हम लेंगे इंडाइजेशन, कभी कभार क्या होता है, वी फील एसिडिटी इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ HCl। कभी ऐसा होता है कि एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है तो वी फील एसिडिटी, एंड दिस एसिडिटी इट कैन बी ट्रीटेड. So since there is excess acid, how can we get relief from it? If we take some base, so we take an antacid. That antacid is actually a base. Generally we take an antacid, that's milk of magnesia. This milk of magnesia, it is magnesium hydroxide, and magnesium hydroxide it is base. So when we take antacid, the antacid it reacts with excess acid in our stomach and hence relieves our pain due to acidity. Similarly, if sometimes an ant bites us, when an ant bites, what happens? Ant bite, it contains formic acid, and it injects formic acid in our skin. When it bites a person, so formic acid is injected into the body. So it can be treated. If sometimes an ant bites a person, what he or she can do, we have to do what? Rub moist baking soda. अगर हम since it is ant bite, it contains acid, it can be neutralized, its effect can be cancelled if we rub some base. It can be cancelled its effect by rubbing moist baking soda, which is available in our homes. So we can make moist baking soda and rub it on the part of the skin where that's affected by ant bite. Similarly, we apply this neutralization reaction in soil treatment. When we use excess fertilizers, use of excess fertilizers, it makes the soil acidic. इससे क्या होता है, सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ होती है. सो जब इसमें एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, जब एसिडिटी ज़्यादा होगी इस सॉइल में, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, या इस सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, कैसे हम इसकी एसिडिटी कम करेंगे सॉइल की? इफ़ वी ऐड सम बेस. सो excessive acid of soil, it can be neutralized if we add quicklime. That quicklime, it's actually calcium hydroxide, which is
calcium oxide, which is a base, or we can add slaked lime, that is also a base, that is calcium hydroxide. या ऐसे ही अगर कभी कभार ऐसा होगा सॉइल की ट्रीटमेंट में, ये ज़रूरी नहीं है हर वक्त सॉइल एसिडिक ही होगी, ना एसिडिक सॉइल में प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, और ना ही अगर इसमें बेसिस ज़्यादा, अगर ये बेसिक होगी, तो अगर इसमें एक्सेस बेसिस है सॉइल में, सो एक्सेस बेसिस दे कैन बी न्यूट्रलाइज्ड हाउ, बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे ज़्यादा इस सॉइल में, उससे क्या होगा, organic manure it will produce acids, and these acids they will react with bases and neutralize the soil. One more application of neutralization is factory wastes. Factory wastes they also contain acids, and if the factory these wastes they are, if we if the factory wastes they contain acids, and the factory acids before draining them, before pouring them into water bodies, we treat them with bases to nullify its acidic effect. So dear students, आज क्या पढ़ा हमने पढ़ा what is neutralization. Let me revise. Neutralization is that process in which acid and base combine. यानी सह process यथ मज अख acid तो base पान combine गज बनावन salt तो water, या इस वनो सह reaction यथ मज acid तो base पन effect कैंसल करान, एसिड करा बेसिक इफेक्ट कैंसल, बेस करा एसिडिक इफेक्ट कैंसल, अत प्रोसेस वन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हेको पन्नी दह दह जिंदगी मज इस्तेमाल कर, इंडाइजेशन ट्रीट करने खतर, आंट बाइट ट्रीट करने खतर, या सॉइल ट्रीटमेंट खतर, या फैक्ट्री वेस्ट कर, इथे पे वारियाह एप्लीकेशंस यम तुम पढ़ियो इन योर in which we will read in detail from your book. This is enough for today. Khuda Hafiz.